Okay, so good afternoon, Afternoon, scholars. Can sir. you hear me? Good afternoon, sir. Good Yes, sir. Yes, afternoon. sir. Good afternoon, sir. Jai Hind, sir. No. Sir, good afternoon. Very good afternoon. Jai Hind, sir. Yes, same to you. Jai Hind. This time. Radhe Radhe, sir. Then Good next. afternoon, sir. Radhe Radhe, sir. Radhe. Okay, so how you all are doing? How you are today? How was your day today? Excellent, sir. Sir, excellent. Excellent. Sir, excellent. Good. Let's do. Good. Sir, good. Okay, so in our today's class, we'll be going to start the new topic, that is introduction to rocket technology. Okay, Yes, sir. so before going to the rocket technology, you will be having a small quiz. Okay, like I'll be asking you the question. You have to raise your hand. Okay, Okay, sir. and I will make down the. Okay, sir. I'll just make down the note who is answering correct or not. Okay. So you want to prepare? You need time, 1 to 2 minutes to go through your notes. Sir. Yes. What, sir? आपको समय चाहिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ. आप नोट्स को प्रिफर कर सकते हो. ओके, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, then I will share the screen and then we'll start and I will ask some questions. Okay. Anyone else? I'll just pick a pen. Okay, so the first question, okay, I'm sharing. I'm just sharing in the chat box. Okay, you have to answer in the chat box. You can answer directly. You can type answers. Okay, one, what is the answer? Second, what is the answer? Third, what is the answer? Okay, like this. You can raise your hand. I'm sharing in the chat box. Who will answer the first? The first three people name will be noted. Okay, even you can raise your hand also. So I have shared the questions in the chat box. Satellite industry. वो भाई वो दिए जरा भाई टैब दे टैब. I have मैं shared the टैब दे question in the chat box. देखिए सर ने क्वेश्चन पूछ रहा आंसर दो. Or questions are there on your screen also. So who know, they can answer. The first five. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. सर 1 2 3 4 5 के सबके आंसर देने हैं. Yes, yes. ओके सर.
Anyone done? Anyone who have completed? Sir, 2 minutes on. You don't have to answer one by one. Together you have to answer. The top 3 person who will answer, their name will be noticed. The first 3. Sir, west to east. First answer. Yes? Sir, first answer is west. No, to you east. should not like this answer. You have to answer all the 5. You answer in the chat box. If you know all the 5, otherwise you can raise your hand also. That also you can do. Okay. So time is up. So the first answer, satellites in geostationary orbit will rotate from west to east. There is a correct option. Correct answer is given. So the first answer given by the Anuva. Okay. Second question is low Earth orbit starts from altitude. So Hijba have answer 160 to 1500. Okay. Hijba, you are correct. Okay, so I have got answer only from 2 people. So low Earth orbit starts from, I said that to remember you. What was that? If you remember 150, you can remember 150 or 160 kilometer to 1500. Right? Then geostationary medium Earth orbit starts from, it will be from where 10,000 kilometer to, it will go up to like 36. Okay. Yet I haven't got that answer. And the geostationary orbit starts from altitude. So it starts from 36,000, almost 35,006. Okay, fourth. So I got for the fourth from the Garvit. Garvit have answered the fourth question. Then apogee of apogee will be 35,786. Is it? I'm not sure. Okay. Okay, fine. Okay, guys. So time is up now. Okay. Now, next set of quiz, and I will give you only 2 minutes of time. Only 2 minutes, not more than that. Okay. So the questions are, I'll share you on the screen. Okay. So your first question is, I will just say that, okay? I will just say that. You have to just type in the chat box. Which software has been used for analysis of the satellite structure? You have to answer in the chat box. Software used for
Analysis. So first answer has come from the Amrit. Correct answer. The correct answer is ANSYS. But Amrit, there is a spelling ANSYS. Okay. Okay, sir. Yeah. Okay. Next question. The next question is, tell me any two flight controller names used in drone. Any two flight controller names used in drone. You have to type in the chat box. Who will type the first? That will be accepted. Okay. NASA DJI and KK board. Very good. Amrit. Okay. Next question. Next question is, roll motion comes because of what? Or how you can do the roll motion in your flight? For that, what will be there? So you can roll it. I'll repeat the question. There is a roll motion in the aircraft. So how the roll motion takes place into the aircraft? With the help of what? There are some control surfaces with the help of that you take. So which control surface help us to go for the roll? What's that? No. Throttle is also one kind of motion. No. For roll, which surface generally used? PU, it is air. Leon, you have written. No. Elevator. No. So PU, it is aileron. Spelling is wrong. So PU has given the answer. Only the thing is there was a mistake. So aileron. What? Aileron. What is that? AILERON. PU. Okay. Okay, sir. So PU have given the correct answer. Okay. Now, next question is, to go like during the takeoff and landing of the aircraft, which control surface will be used? During the landing and takeoff, which control surface will be used? The first answer I am waiting for. Which control surface used? Elevator and elevator only. Okay, flaps. You can say flaps is actually for speeding the aircraft and stopping the aircraft. Okay. Flaps actually we use generally to create the more lift. Okay. So it is the correct answer is elevator. So Amrit has given the correct answer. Good, Amrit. Okay, next. Okay, now I will share the question. Okay. What is the full form of DGCA? What is the full form of DGCA? Answer will be considered, which will answer the first answer will be considered. Full form of DGCA. DGCA. Once again, I'll repeat the question. DGCA का पूरा नाम क्या होगा या फुल फॉर्म क्या होगा, पूर्ण रूप क्या होगा? Yes, Pihu. Let's see who will answer the first. Full form of DGCA. Nobody? Searching from the Google? Taking the help of Google, uncle? Okay. So answer has come from the Ram Bharadwaj, Director General of Civil Aviation. Ram, taken the help of Google? Huh? Okay.
Okay, next. The next question. The drone which flies like bird called as. The drone which flies like bird. What is that called? The name of the drone. Sir, repeat a question. Name of the drone which fly like a bird. आपको ड्रोन का नाम बताना है जो बर्ड की तरह फ्लाई करता है. Okay, so गर्वित है वहां से bionic drone. So the correct exact word has come from the Santosh. That is called ornithopter. Very good. What is the name of that drone, guys? So it's not bionic, like exact the scientific word we'll use as ornithopter. Okay, right. Let's go for the next question. Okay, I'll share the screen now. So you have to first, okay, what is the full form of ESC? Full form Second of repeat the ESC. सर एक बार रिपीट कर दो. Full form of ESC. EST. Answer has come from that. Amrit. Full It form is of EST. electronic speed controller. The answer has come. Electronic Okay, stability control. electronic speed controller. Okay, now the questions are there on your screen, guys. Who is ready for answer this? I'll give you 1 minute of time. Get ready and let's see who is going to. You have to raise your hand. Who is ready with all the this 5 answers? You can raise your hand. Okay, so we go with Pihu. Yes, Pihu, बोलिए. 5th question. आपका अगर क्वेश्चन रॉन्ग है आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है? Pihu, बोलिए. Pihu, मेरी आवाज आ रही है आपको? Sir, बोलिए. sir, 6 routers. Okay, first answer is 6. Okay, second. क्या कहना है? Pihu, are you able to answer? Yes or no? Okay, now Sir, this can question goes to Amrit. Yes, Amrit, tell me, what is the first answer? So, lipo battery. No, for the first answer, how many rotors present in hexacopter? First answer is 6 routers. Okay, second. Second is lipo battery. Lithium loan. Can you tell me full form? Amrit, can you tell me the full form? Lithium ion batteries. Lithium? Lithium loan batteries. No, it's not lithium non. No, it's not lithium non. It's a lipo. Lithium batteries. It's a lipo. Lithium polymer batteries. Not like this. This is not a correct way, Hijba. Somebody is answering right. Third question. Amrit. I'm mentioning 4 types of flight controllers. So first Yes. is another DJI, second is KK board, and third is autopilot ATM. Okay, anyone want to answer this? 7th question. And fourth is 6 box. Apart from Amrit, anyone want to answer? You can raise your hand. Who want to answer? 7th one. Look at your notebooks, your notes. Sir? Yes, Amrit. So मैंने आंसर सा ऑलरेडी दे दिया.
ना, आपने दो ही बोला ना, आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है अमृत. So first is Naza DJ, second is KK board, third is autopilot APM, and fourth is he walk. It's a pixel. It's a pixel. Okay. 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 What about eighth one? Which type of motor? Sir, PLDC. PLDC motor. PLDC. What is the full form of PLDC? So no idea. Anyone who want to answer? Full form of PLDC? Apart from Amrit, what is the full form of PLDC? Anyone? Sir, Yes, Ayush. sir, brushless direct current motor. Very good, Ayush. Very good. Sir, Ayush नहीं sir, Karan. 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 Okay. Full name Karan. Sir, Chaudhary. Okay. Class. So last is what are the motions of drone? So Karan, what's your class? आप किस क्लास में हो? Sir, 7th A. Okay, fine. So, Amrit, clear? BLDC का full form? Brushless direct current. Okay. Okay. Then, what are the motions of drone? Amrit. First is clockwise and second is counterclockwise. अब थोड़ा आपका फिर से आवाज धीरे आ रहा है अमृत. Sir, first is clockwise and second is counterclockwise. No. So Hijba. motion Question transfer to Hijba. Yes, Hijba. बोलिए. Roll, Okay. roll, pitch, Okay. yaw, and throttle movements. Okay, good. Is it clear, Motions, Amrit? throttle Amrit, is motions. it clear? What are the motions? Yes sir, clear sir. मेरा फोन ना Roll. थोड़ा सा दूर रखा हुआ था तो फिर इसलिए दिखाई नहीं दिया मेरे को. Okay, okay, fine. Okay, we'll play last time, then we'll move to our next topic. So, yes, you have to answer this. Look at the pictures and tell me 1, 2, first, second, third, fourth, fifth. What are the name of this in this picture? You have to raise your hand. Sir, Yes, Divyans. Yes, Divyans. You can see the question on. आवाज ठीक से नहीं आ रही. आपको ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, पिक्चर Sir. दिख रहा होगा, उसमें नाम Sir. बताना है, ठीक है? Can I? Sir, Not like, please raise your hand, I'll call the Oh. name. You don't need to say can I will call the names. Yes, Anwa. sir, first one bicopter. Okay, first one is bicopter. So you Sir, that then is, your last answer row is and your fourth answer one is your answer is wrong. First one is not a bicopter, so question transfer to the. Okay, what is the second one, Anwa? Sir, next and the second line one, sir. Second one, what? Orange color. Orange No, sir, popular. down. Black one. Tell me the in the order. Sir, fourth one. Fourth one is what? Hexacopter. Okay, and next one. Next one is quadcopter, sir. Okay, next Sir, one is can I- quadcopter. And what सर about आपकी that? आवाज नहीं आ रही. यहाँ पे बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है? Yes, Anwa. Okay, now who want to answer all 5? Anyone who can answer all 5? Sir. Yes, Piyu. Yes, Piyu, बोलिए. Sir, Okay, let me check who have answered. Yes, Nandini. Sir, first prodrone. First one is Prodrone. pro drone. What is that pro drone? Sir, first one. आपकी आवाज नहीं आ रही. बच्चों मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. मेरी आवाज के लिए आप एक बार नेटवर्क देख सकते हो बच्चे. Okay, let's go with the Divyans. Divyans, बताइए. What is the name of the first one? Amrit. So first one is helicopter. Amrit. So first one is helicopter Okay, good. and second is bicopter. Okay. Third is tricopter and fourth is hexacopter and fifth is quadcopter. Okay. And last one is Quadcopter. quadcopter. So first one is, guys, you can call it as helicopter or single rotor copter. Single rotor copter. Okay, good. So Amrit and fine. So good job, सर guys. आपकी आवाज नहीं आ रही.
पीयू आप एक बार अपना आयुष आप अपना एक बार नेटवर्क देख सकते हो, मेरा आवाज सभी को क्लियर आ रहा है? मेरा आवाज सभी को क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So let's start today's class. So did you enjoy the questions? With Yes, sir. questions? Yes, sir. Yes, sir. Let's go for the Yes, next. sir. So in today's class, we are going to start about what? What we are going to talk Rocket. about? Rocket, sir. Basic Rocket. of Okay. So now I'm going to launch rocket from everybody's home. Okay, that will be Yes, sir. fine. Energy came, sir. Rocket means. Yes, sir. So I hope that you can see the screen. Yes, Yes, sir. sir. What you can see on the screen? Today's Sir, topic. Topic Rocket. rocket. And who is that, guys? Old man, Science. Scientist. 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 These all are you only. Okay, in old, when you become old now, you will look like this only. Okay, fine. Shall I go to the next? Yes, sir. Okay, now as in the satellite part we have, okay, can anybody say what are the characters were there in the satellite part? Anyone remember? Yes, Ijba. Sir, can I? Yes, Anva. Sir, teacher name is Divya. Ah, Ram, Sham, Anupriya. Anupriya. Anupriya was separate or Anu and one Priya? Separate, sir. Okay, Separate. so total 5 characters. Okay, the similar to that we have here in the rocket this technology. How many characters you can see on the screen? 2. 3. One is Three. Professor Vikram, Harish and Ali. Abhimanyu. 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 3 characters. So throughout the rocket technology they will be coming in between, okay, and talking to each other. Okay, let's go forward. So the next is, okay, so now the thing is, tell me, what do you mean by rocket? What you understand from the rocket? Anyone, please raise your hand. When rocket will come into your, not like this, raise your hand. When rocket comes into your mind, that word, what comes into your, like, what you thought and what kind of thought comes into your mind? Yes, Santosh. Rocket is a machine, Machine, okay. What it do? and it will go to the space. Okay, Only- it go to the space, okay. And it is only one machine. It will go to the space. Okay, we'll go to that space then. That's all, sir. Okay, Amrit. सर रॉकेट में हम पेलोड इंस्टॉल करके और जैसे कि सैटेलाइट को इंस्टॉल करके अर्थ के ऑर्बिट में या फिर किसी और प्लेनेट के ऑर्बिट में उसे छोड़ सकते हैं. Okay. Right. Next, Garvit. Sir, the rocket is a launch vehicle that can take payloads and also humans to space, and it is also spacecraft that takes humans and its payload to space in our Earth orbit or other planet orbit. Okay. Good. Anuva. Sir, it is a cylindrical shape object. It goes into space. Okay, ever LPG cylinder also cylindrical shape. So LPG cylinder goes to space? No, sir. Okay, fine. Okay, good. Yes, it's actually like a cylindrical shape. So let's go for to know what is rocket. Okay, now can anybody say? Can I let me tell ask you one- what is rocket? You have to raise your hand, not like this. You have not raised your hand. I'll not give the chance now. Okay, now. Okay, tell me now, what is the difference between rocket and missile? Anyone? Raise your hand. Difference between rocket and missile. Yes, Ram, बोलिए. रॉकेट और मिसाइल में आपका डिफरेंस क्या होता है, क्या अंतर होता है? राम भरद्वाज बोलिए. ओके, करण. पीहू. Sir, हाँ बोलिए. sir, missiles are powered by an engine, generally either a type of rocket. Energy for jet engine. Rocket are generally of the sold. गूगल डेफिनेशन, गूगल अंकल. हाँ Sir, no, sir. Sir, ये कॉपी हमारी एक सर 5th उसमें लिखा हुआ है ये वाला आंसर. ओके, बोलिए पीहू बोलिए.
सर रॉकेट से हम स्पेस में जाते हैं इसके लिए, मिसाइल और से हम अटैक करते हैं। मिसाइल से हम अटैक करते हैं. वेरी गुड, गुड डेफिनेशन, वंडरफुल. I think she has not copied this. It's a good definition. The definition which like rocket is to go, like it's a kind of space vehicle you can say, and missile is a machine you can call as, which is used for basically attacking, right? Yes, Amrit, बोलिए आपकी क्या डेफिनेशन है? अपने साथ वॉरहेड को कैरी कर सकता है। अमृत, आपकी आवाज धीरे आ रही है, आप थोड़ा पास में माइक क्या कीजिए. सर जो मिसाइल होता है वो अपने साथ वॉरहेड को कैरी कर सकता है और वो किसी को भी मतलब हार्म कर सकता है, किसी एनिमी कंट्री को। और जो रॉकेट होते हैं वो पेलोड लेकर के स्पेस में जाते हैं। और अगर रॉकेट डिफ्लेक्ट हो गया अपने पास से तो वो भी तो हार्म करेगा ना, किसी के छत के ऊपर गिर गया तो. जो मिसाइल होती है सर वो उससे कई गुना हार्म कर सकता है क्योंकि वो वॉरहेड लेके जाता है। ओके, यस नंदिनी, बोलिए नंदिनी. सर एक रॉकेट स्पेस व्हीकल होता है जो कि स्पेस में लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट मतलब कि स्पेस में लॉन्च किया जाता है क्योंकि हम स्पेस की जानकारी ले सकते हैं। और मिसाइल जो है वो हमारी एनिमी कंट्री पर वार करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, गुड. सर Please guys, don't call. I will call your name. You can raise your hand. सर करण Karan, when I call you, why you have not on the time answered? Yes, बोलिए Karan. Rockets are unguided and powered by rocket engines, while missiles are guided and may be powered by other types of propulsion system. Okay. Okay. Ram Bhardwaj, सर बोलिए. आपका हैंड रेज है ना गर्वित? सर जो रॉकेट होता है वो स्पेस में जाता है और जो मिसाइल होती है वो एनिमी पर अटैक करती है और वो स्पेस में नहीं जा सकती। रॉकेट मोर हाइट कवर कर सकता है मिसाइल से ज्यादा। और सर रॉकेट अपना पेलोड कैरी करता है और मिसाइल वॉरहेड कैरी करता है। ओके, नाउ लिसन, योर होम टास्क, योर होमवर्क. आज के लिए आपका होमवर्क क्या है? आपको क्या करना है? कल मैं किन्हीं 3 बच्चों को, ठीक है, 5-5 मिनट का टाइम दूंगा. हाउ मच टाइम विल गेट? सर 5 minutes. सर 5 मिनट्स। 3 बच्चों को दूंगा, ठीक है ना? अब वो 3 बच्चे कौन है? वो tomorrow we'll select that 3. So here what you'll do, or maybe I can give the more number of different chances. Okay, तो आपको क्या करना है, एक ऐसा पेपर या प्रेजेंटेशन टाइप में बनाना है, ठीक है? 2 और 3 स्लाइड्स बनाने इसमें, और पेपर में भी कर सकते हो, उसका फोटो Sir, you लेकर can के, repeat again. ठीक है? So what you have to do, you have to make 2 to 3 pages slide presentation. You can do on a paper also if you don't know how to do. Okay, so there you have to talk about what is rocket, what is missile, and what is the difference between rocket and missile. And the third slide will be what are the missiles available in India, what are the missiles that India have, and what are the rockets that India have. So 3 slides, 3 or 4 slides. In 5 minutes you have to talk about. You can do in group also if you want. Okay, you can form a group and you can tomorrow talk about it. Okay, like how, जैसे कि मैं आज यहाँ आपके स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ ना, ऐसा आप भी को कल मैं मौका दूंगा 5 मिनट में, तो आप ग्रुप में कर सकते हो, ठीक है? So the topic is clear, everyone? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Okay. चलिए आगे चलते हैं. बोलिए. Yes, somebody is asking. So I'm asking that only 3 students have to make, or every student have to That make we'll that? see, that we'll see. But as per now, like we will go top 3, like who will say the first tomorrow, or like what you can do, you can make it and you can send to the group. Okay, I will select any top 3 which is the good one. Okay, like that you can do. So today you prepare, send in the group, or who are directly, you can send directly to me, they can send directly. You make it and send it to me, I will select the top 3. Okay, is it सर clear? हिंदी में भी कर सकते हैं। Everybody is clear? Yes, sir. हिंदी में कर सकते Yes, बच्चों sir. लोग आप अपने माइक को पहले ऑफ रखें, सबका माइक ऑफ है। मैं कैसे मेरा आवाज, मैं कह रहा हूँ कि आप प्रेजेंटेशन बना लीजिएगा 2 से 3 स्लाइड्स का, और अगर आपको नहीं आता है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आप पेपर में भी बना सकते हो। लिख लीजिए, गूगल से सर्च करके अच्छा सा डायग्राम बना करके उसको आप मोबाइल से फिर यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ठीक है ना? So that you can done. So
before that I'll select any top 3. You can do in teamwork also. ग्रुप में भेज दीजिए अपने, जिस ग्रुप में भी आप ज्वाइन है वहां से मैं पिक कर लूंगा जो top 3 होंगे. Even you can send me a personally also. So I will select the हिंदी top लैंग्वेज 3. में बना सकते हैं They will get tomorrow 5 minutes of time to explain about this topic. ठीक है. Yes अमृत बोलिए आपका क्या डाउट है. सर हिंदी लैंग्वेज बना सकते हैं Yes हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको कंफर्टेबल. Okay. You can use the videos also. If you want to show the video also, you can do it. That's your work. You have to do, like, make it beautiful so it will be easy for everybody to understand. Okay. Is it clear to everyone? यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, let's sir. talk about rocket. So what is rocket? Rocket is a spacecraft or projectile that obtain thrust from a rocket engine. So what is rocket? Rocket is a spacecraft, Is or you craft. can call it as a projectile. Projectile means आपने देखा, देखिए आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज को फेंकते हो तो वो पता है किस तरीके से जाता है, उसका पाथ क्या होता है. नहीं, जब आप कोई चीज फेंकते हो ना तो उसका पाथ पता है आपको कैसा होता है. उसका पाथ होता है आपका प्रोजेक्टाइल. जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, स्क्रीन पर देखिए. अब आपने एक बॉल को फेंका तो बॉल कैसे जाएगी पता है, इस तरीके से जाएगी. इस पाथ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल. क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन. Projectile motion. Projectile motion. और इस रास्ते को जो फॉलो कर रहा होता है, जैसे मान लीजिए बॉल फेंका तो बॉल को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल. ठीक है. अब देखिए आपका क्या होता है, रॉकेट होता है ऐसे करके, राइट, लैंड पर. जब फायर होता है तो इंजन क्या होता है, पहले रॉकेट ऐसे जाता है, ऐसे 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 जाते, ऐसे 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 करके जाता है. समझ रहे हैं. जब मैक्सिमम हाइट रिसीव होता है सैटेलाइट को सेपरेट किया जाता है और वापस से क्या होता है, वापस उसी तरह. इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, what this path is called, projectile. That object is called projectile and which path it follow, that is motion, is called projectile motion. तो इसीलिए यहाँ पे projectile word यूज किया हुआ है. So and क्या होता है, like to move forward, आगे जाने के लिए your this rocket use what in like force you can say, or you can get like you can call that as a forward force is nothing but thrust, and that is obtained from the rocket engine. रॉकेट में इंजन होता है, उससे आपको फोर्स मिलता है आगे की ओर जाने का, जिसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं लाइक टेक्निकल भाषा में. ठीक है. तो इज इट क्लियर गाइस. Yes, sir. आपको मैं बेसिक डिफरेंस बता दूं. रॉकेट क्या होता है, एक तरह का व्हीकल है जो सैटेलाइट्स को ऊपर ले जाने के लिए काम में आता है. ठीक है ना. एंड मिसाइल इज अ लाइक इट्स काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट which basically used for targeting some object and destroying it. Okay, so missiles basically used for destroy something, and rockets are basically kind of vehicle to plan some mission. Okay, and somebody of you saying like missile is the guided one and rocket is the unguided. No, you don't know rocket. Like see, you know missile can be guided also and not guided also. You know cruise missile, there is something is called cruise missile. They are actually guided, you know, like if you have seen in the videos, if some enemy aircraft is coming, so what will happen, that when you fire the missile, that missile will follow wherever the aircraft will go, you know. So that is called guided. Okay, so missile can be guided also and unguided also. But what about rocket? Rocket will be guided or unguided? Guided. It's a kind of guided. Okay. Because you know, like how much height, like at what height satellites needs to be come out, so that you know that, so you can call as guided. Okay, let's go to the next. Okay, now let's talk about rocket principle, how the rocket works. So can anybody say how the rocket works? Raise your hand. Sir, can you repeat the question? मेरा क्वेश्चन है रॉकेट कैसे काम करता है, रॉकेट के पीछे का जो सिद्धांत होता है, what is the principle behind of a rocket, how it goes. So that is what my question is. Yes राम बोलिए, राम भरद्वाज. संतोष. Sir, rocket, it will be work on the in the basis of three types. It is the gas, liquid, and gas, liquid, and gas, liquid, and solid.
You are telling me types of that at all? No. I'm asking how rocket works, rocket engine works, or rocket principle. What is the rocket principle? That is what I'm asking. Kanik Tyagi. Yes, Garvit. Sir, the rocket work on third law of Newton. That is action. सर जो एक्शन जो होता है उसका एक रिएक्शन होता है. जब रॉकेट थ्रस्ट पैदा करता है, जब वो थ्रस्ट नीचे की ओर आता है तो उसमें रिएक्शन होता है जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर उठता है और ऊपर चले जाता है. इस बेसिस पे रॉकेट का इंजन वर्क करता है. ओके, तो सुनिए बच्चों लोग, रॉकेट का जो प्रिंसिपल होता है बेसिकली वर्क्स ऑन न्यूटन थर्ड लॉ. न्यूटन के, हमारे न्यूटन भाई साहब थे, राइट? तो न्यूटन के 3 लॉ होते हैं. न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ, ये आप लोग पढ़ेंगे 9th में जाएंगे तो, ठीक है, इवन आई थिंक 8th ग्रेड आल्सो. न्यूटन सेकेंड लॉ, एंड द थर्ड वन इज न्यूटन्स, व्हाट इज दैट? न्यूटन्स थर्ड लॉ. थर्ड लॉ. Ayush, please don't use marker and at all on the screen. Why you are doing that? Okay, Newton's third law. Okay. So now जो आपका जो basically rocket होता है, that works basically on Newton's what? थर्ड लॉ. Third law. I will explain you all the 3. So देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है. न्यूटन फर्स्ट लॉ says that अगर कोई ऑब्जेक्ट, if any object is in rest, if any object is in rest, it will be in rest only until you will not apply any outside force or external force. मतलब कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है, मतलब कि रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक आप उसमें बाहर से कोई बल नहीं लगाते हो. और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, मीन्स इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इट विल बी इन मोशन ओनली, मीन्स मोशन में ही रहेगा. इफ अंटिल यू आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब तक आप बाहर से कोई फोर्स ना लगाओ. तो ये आपका क्या होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ. अब जैसे आप स्पेस में बात करिए, आपकी धरती क्या करती रहती है? सूरज का एक ही गति से चक्कर लगाती रहती है हमेशा. तो आपको दिखता है डेली रात होता है, डेली दिन होता है, राइट? So how it is possible? So धरती क्यों नहीं रुक रही है? Why Earth doesn't stop to rotate or revolve around the, what do you get? Rotate this, do the revolution around the Earth. Why it does not stop? Because there's the Newton first law. So क्योंकि Earth क्या है? Continuously motion कर रही है, same speed से. And is there any external object which is applying force? No. So nobody is there to applying the external force. So it's why Earth is in keep on doing motion. So that's why what? It is in motion only, and it is keep on like revolving around the sun. ठीक है? वैसे और भी जो planets है आपके चक्कर लगाते हैं, तो वहां पे कौन सा अप्लाई होता है? न्यूटन. कौन सा लॉ अप्लाई होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ. Newton first law says that if any object is in rest, it will be in rest, and if any object is in motion, it will be in motion until you will not apply any external force. Is it clear? सभी को clear है? किसी भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा? स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक उसमें बाहर से कोई बल ना लगाए. या कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर गति कर रहा है तो वो गति में ही रहेगा, गतिमान ही रहेगा जब तक उसमें बाहर से कोई बल ना लगाए. दूसरा एग्जाम्पल, अब बस का एग्जाम्पल लीजिए. जब बस खड़ी रहती है तो वो क्या रहती है? जब तक उसमें चाबी ना लगाई, इंजन स्टार्ट नहीं किया. इंजन स्टार्ट किया तो क्या होता है? उसके बाद बस आपका चलने लगती है. बस स्टार्ट टू मूव व्हेन यू स्टार्ट द इंजन. तो देखिए पहले बस क्या थी? इनिशियली बस वाज इन द रेस्ट एंड ड्राइवर हैज स्टार्ट द इंजन. सो स्टार्टिंग द इंजन है एक्सटर्नल फोर्स. ड्राइवर ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक बाहर से बल लगाया. तो व्हाट हैपेंड? बस हैज गॉन फ्रॉम रेस्ट टू मोशन. सेम अगर कोई बस मूव कर रही है, कोई बस स्टॉप आया, अब बस को रोकना है, मतलब कि बस क्या है आपकी? गति में है. बस इज इन मोशन. अब आपको स्टॉप करना है तो आप क्या करेंगे? स्टॉप करने के लिए ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी? सर नो. बस विल स्टॉप ऑटोमेटिक. No, sir. So in order to stop the bus, what driver has to do? वो सर ड्राइवर स्टॉप करेगा. नहीं, क्या करेगा स्टॉप करने के लिए? सर ब्रेक मारेगा. ब्रेक मारेगा, right? He will put a brake. So then Yes, what will sir. happen?
bus was moving, it will go into the rest. So what is happening? अगर आपको मोशन से रेस्ट में जाना है तो आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ रहा है. सेम जब आपको रेस्ट से मोशन में जाना है तो आपको क्या करना है? इंजन स्टार्ट करना पड़ रहा है. So that is what the thing. If you are in motion and you want to come into the rest, you have to apply external force. Otherwise, you will be keep on motion. तो बस वाला अगर ब्रेक नहीं अप्लाई करेगा, क्या बस स्टॉप होगी? नो सर. किसी को क्या होगी? किसी को मार देगी टक्कर, बस हो गया, है ना? यस सर. So that is called Newton first law. Now Newton second law क्या कहता है? इसमें हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे. आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. देखा है आपने? नो सर. देखिए बल का ये भी, जो आपका बल का जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये भी होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास, इसको आप भार बोलते हैं, इनटू एक्सेलरेशन. ओके, एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? त्वरण. क्या बोलते हैं? भार थोड़ा त्वरण. तो एक्चुअली ये जो फोर्स का जो फॉर्मूला आता है ये न्यूटन सेकंड लॉ से होता है. ये बोलता है रेट, जो आपका जो क्या है, जो आपका किसी भी चीज में जो बल लग रहा होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है. किसके होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सर आई हैव अ क्वेश्चन. लेट मी कंप्लीट. सो रेट मतलब कि आपकी जो वेलोसिटी है, वेग है, वो किस गति से चेंज हो रहा है. न्यूटन सेकंड लॉ इज टॉक अबाउट दैट. हाँ बोलिए, आपका क्वेश्चन क्या है? अभी बोलिए. रॉकेट की तुलना किसी इंजन से करी जा सकती है. रॉकेट की तुलना किसी इंजन से. रॉकेट, हाँ रॉकेट एक वन काइंड ऑफ इंजन ओनली का है. क्योंकि रॉकेट वही काम करता है जो कि हमारे सड़क पे चलने वाले व्हीकल करते हैं. हाँ वही है. रॉकेट को आप व्हीकल से कर, रॉकेट क्या है? देखिए सड़क पे जो चलने वाले व्हीकल होते हैं वो क्या रोड पर चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह. वैसे स्पेस में जाने के लिए आपको रॉकेट चाहिए होगा, तो वो एक तरह का क्या है आपका व्हीकल ही है, स्पेस व्हीकल. ठीक है ना? आपका डाउट क्लियर हुआ बच्चे? यस सर. ओके. नाउ न्यूटन थर्ड लॉ. न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? जैसे मान लीजिए आप अपना हाथ लीजिए, करिएगा नहीं, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ उसे अभी करिएगा नहीं, और उसको कस के दीवार में मारिए. क्या होगा? इफ यू पंच अ वॉल फ्रॉम योर हैंड, व्हाट विल हैपन? सर क्या कह रहे हो? आपने काफी तेजी से मुक्का मारा दीवार पे, ऐसे किया और मारा दीवार पे खींच के, व्हाट विल हैपन? दीवार धक्का सर हाथ रिएक्शन आपका हाथ का क्या होगा? दीवार टूट जाएगी और हमारा हाथ भी टूट जाएगा. दीवार टूट जाएगी? क्या दीवार की पुट्टी तो हट जाएगी. Okay, fine. So see here, when you punch a wall, so here action, what is your action? You are punching a wall, और उसका रिएक्शन भी होगा, पता है आपको? Every action having a equal and opposite reaction. Every action have have equal and opposite reaction. opposite reaction. That is what the Newton's third law. आप जितना फोर्स लगाओगे उतना दीवार भी आपके ऊपर लगाएगी, उसी तेजी से आपको बढ़िया से चोट भी लगेगी. राइट? यस सर. Sir, but what rocket will you? Now same, what will happen? Look at the rocket. Can you see the rocket? Sir. Yes sir. The scientist is holding. Okay. Now look at here. I'm just, suppose engine has fire. Suppose engine has Fire. Okay. Now what will happen? Engine is firing which direction, guys? Opposite direction. Downward direction. So the fire is coming downward direction, and it is coming with some velocity, right? कुछ Yes, गति sir. से आएगी, right? वेग से आएगी, right? Yes, sir. तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है हमारा? नीचे की ओर हो रहा है. व्हाट इज एक्शन? बहुत तेजी से गैसेस, जो जलने वाली जो गैसेस है जो इंजन से निकल रही, वो बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं. तो व्हाट विल बी द रिएक्शन, गाइस? Same opposite reaction will happen in the opposite direction, upward direction, and that is what called, that is how the engine moves in the upward direction. What will happen? Because of the fire, ये बहुत तेजी से जो आग है वो नीचे आती है, तो उसका रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? अपवर्ड डायरेक्शन. सेम गति से, सेम बल से ये ऊपर की ओर जाता है, तो उसको बोलेंगे रिएक्शन. और टेक्निकल भाषा में हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट. ठीक है? इज इट क्लियर गाइस? सर. Yes sir. अब देखिए आपके ड्रोन में भी क्या होता है? ड्रोन है, होता है ना? ड्रोन में क्या होता है? आपको मान लीजिए ड्रोन को ऊपर ले जाना है, तो आप क्या करेंगे? ये जो पंखे होते हैं ये क्या करते हैं? नीचे की ओर हवा फेंकते हैं. तो रिएक्शन किधर होगा गाइस? ऊपर की तरफ.
तो ड्रोन आपका ऊपर जाएगा। तो एक्शन रिएक्शन, हमारा ड्रोन ऊपर जाएगा और हवा कहीं नीचे आएगी। राइट। सेम। अब चलिए हवाई जहाज की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में क्या होता है, आपने इंजन देखा होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट हैविंग इंजन इन द विंग पार्ट। आपके विंग में इंजन होता है ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट। कुछ एयरक्राफ्ट में इंजन आपका पीछे भी होता है और कुछ में, छोटे एयरक्राफ्ट में आगे नोज में होता है। तो अब देखिए ये हवाई, मान लीजिए ये नोज वाला है, जो छोटे जेट प्राइवेट जेट्स होते हैं ना, उसमें एक्चुअली नोज में होता है। तो उसमें क्या होगा, ये पंखा घूमेगा, ये पंखा घूमेगा, तो क्या होगा, ये हवा नीचे पीछे की ओर फेंकेगा, तो हवाई जहाज किधर जाएगा, एक्शन पीछे की ओर हो रहा है, तो रिएक्शन किधर होगा, की तरफ, गाइस साइड आगे की तरफ। आगे। You will be having a reaction in forward direction and then that is how the aircraft start to take runway. इंजन को स्टार्ट किया और ये हवा को सक करता है और पीछे की बहुत तेजी से फेंकता है। तो सेम स्पीड से क्या होगा, हवाई जहाज आपका, योर एयरक्राफ्ट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर? Yes, sir. That is how your aircraft move forward. Action reaction. आप दोबारा समझा सकते हो सर? यस, क्यों नहीं। देखिए आपका जो हवाई जहाज होता है, ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये हवाई जहाज है, ठीक है, मान लीजिए। अब हवाई जहाज में क्या होता है, आपका जो छोटे हवाई जहाज होता है उसमें करो और उसे खोलो, जो पंखा होता है वो आगे लगा होता है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, घूमता है। अब अच्छा, पंखे का काम क्या होता है Sir, Guys, what is the use of fan? सर हवा देना। Sir, हवा देना। तो आपके घर में देखिए फैन लगा होता है, राइट, यू हैव फैन इन योर होम, राइट। तो उसमें क्या होता है, हवा क्या होता है, उसको ठीक से आपको लगाना होता है। वो हवा या तो ऊपर की ओर फेंकेगा, नीचे, तो आपके लिए किधर फेंकना चाहिए, वो नीचे की ओर, राइट। तो आपको इस तरह से पंखे को अटैच करना होता है। यू हैव टू अरेंज योर फैन इन सच अ वे दैट इट शुड थ्रो द एयर डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आपको हवा लगेगी। वैसे ही अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको आगे मूव करना है, तो हवा किधर फेंकना होना चाहिए इसको, वेयर शुड इट थ्रो द एयर। वो भी ले ले, इसके क्वेश्चन भी लिख ले, क्या लगा क्या कह रहा है, ऐसे क्या याद रहना। Guys, your mics are on. It is very, like, how many times should I say? It's create lots of disturbance if you keep your mic on. Please off your mic, everyone first. Everyone off your mic. Everyone off your mic. Sir, Who is that? Mic is on. See, if you want to speak something, please raise your hand. But don't switch on your mic. She is Jay sir, Chaudhary. I To unmute raised yourself, it hand. create lot of disturbance in the class. I will not able to speak. हैंड रेज करिए अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है। Yes, somebody was asking who. गर्वित बोलिए। Sir, I did not understand Newton's second law. न्यूटन से कर लो। अभी आप याद रखिए, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपको डीप में नहीं जाना अभी, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। जो आपका बल Okay, का sir. जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भार गुणा एक्सीलरेशन, उसी से ही आता है, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. और ये होता है आपका वेग की दर क्या है, जो वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। और ये संतोष बोलिए। यस संतोष, व्हाट्स योर डाउट? nothing sir. Okay, why your hand has raised then? Amrit, Answer. यस सर। बोलिए। सर जो ये रॉकेट है सर, इसमें जो ये रेड पार्ट है हाँ। सर, इसमें शायद फ्यूल होता है ना Which one? सर? रेड जो पार्ट। सी देखिए, अब इसमें क्या है आपका, देखिए ये आपका क्या, एक तरह से पूरा मिशन प्लान किया गया ह्यूमन स्पेस। जो आप इसमें देख पाइए, स्पेस शटल है एक्चुअली, समझ रहे हो आप, क्या है ये Yes. आपका स्पेस शटल है। इसमें जो आपको ये दिख रहा है ऊपर वाला, आगे फ्रंट वाला पार्ट, ये आपका क्या है, जिसमें स्पेस शटल है ये एक्चुअली, और बाकी वाला रॉकेट पार्ट है। तो रेड वाला जो दिख रहा है ये आपका क्या होगा, इसमें आपका इंजन होगा, ठीक है ना। क्या होगा, इंजन वाला पार्ट, जो मतलब कि आपको कैरी करेगा और ऊपर ले जाएगा, रॉकेट बोल सकते हो, रेड वाला पार्ट, ठीक है। और इधर ये जो आपको बगल में दिख रहे हैं छोटे छोटे, उसे बूस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूस्टर्स। और ये सिलेंडर आप बोल सकते हो बूस्टर्स। और अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाए, कैरी, मतलब फ्यूल को कैरी करने वाला। क्या करने वाला? फ्यूल। तो आपका एक्चुअली जो रॉकेट जो मिशन होते हैं ना, उसमें दो तरह के हम बात करेंगे। हम एक्चुअली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। आपको पता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं, राइट।
hydrogen Yes, and sir. oxygen Yes, sir. liquid, what gaseous form, but we have to carry in the rocket, it is in liquid form. Okay, we'll talk about it. Okay, that is called cryogenic technology, so we'll talk about it. Okay, Amrit, is it clear? Yes, sir. Now यहाँ पे क्या हुआ, ये पंखा इस तरह से घूमेगा, हवा पीछे की ओर फेंकेगा, तो ये क्या हो गया, हवा पीछे की ओर फेंक रहा है, इट इज थ्रोइंग द एयर बैक साइड, so that is your action, that is your action. So what will be the reaction? With the same force, the reaction will be in the forward direction and your aircraft will move. तो आपका हवाई जहाज जो है वो आगे की ओर जाएगा. समझ में आ रहा है बच्चों? Is it clear? Yes, sir. Okay. That is how your rockets also move in forward direction by pushing the air with very high velocity. Like आपका जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है, बर्न होने के बाद नोजल होता है, नोजल से बाहर आता है हमारा बहुत तेजी वेलोसिटी से, ठीक है, तो उसका रिएक्शन क्या होता है, आगे की डायरेक्शन में, and that is how the air rocket and even aircraft and drones works. So rocket principles, so rocket engine works by action and reaction, Newton's third law, and pushes rocket forward simply by expelling their exhaust in the opposite direction at high speed and can therefore work in the vacuum of space. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रॉकेट है आपका, पीछे की ओर वो जो आपकी गर्म हवा, गर्म जो गैसेस है इंजन में फायर होने के बाद जो आपका फ्यूल जला है उससे जो गैसेस आ रही बहुत तेजी से बाहर आ रही है पीछे की ओर, किधर की ओर, पीछे की ओर, तो रिएक्शन कहाँ हो रहा है आपका, आगे की ओर सेम, तो उसी जितनी गति से आपकी जो ये जो फायर है पीछे आ रहा है उतनी गति से क्या होगा, आपका रॉकेट आगे की ओर जाएगा, ठीक है। फिर से किसी का माइक ऑन है, whose mic is on? Guys, please mute yourself, it creates lot of disturbance, please check your, maybe by mistake it happened, but please check your mic, it's create lot of different disturbance. Okay, next let's talk about basic components of rocket. So what are the basic components of the rocket? You can see, so the top part, okay, can anybody say where will we will keep our satellite? Like rocket basically we use for launching satellites, right? Which part the satellite will be? Please raise your hand. रॉकेट है ये पूरा आपका, इसमें सैटेलाइट को कहाँ पे रखा जाता होगा? Raise your hand. Raise your hand, guys, who want to answer. Where will be the satellite will be kept when initially the rocket is going to launch? Yes, Ishba, बोलिए. Sir, in a guidance system. In the guidance system, okay. Or maybe nose cone. Okay, nose cone. Amrit? In both of them. So in payload system. Payload system, okay. Okay, so here यहाँ पे क्या है आपका, ये जो टॉप वाला पार्ट होता है नोज कोन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, पेलोड सिस्टम एंड गाइडेड, ये वाले द टॉप मोस्ट पार्ट, वहां पर ही हमारा सैटेलाइट रखते हैं. कहाँ पर रखते हैं, जो टॉप वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पर हम सेट. अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए किसका साइज सबसे बड़ा है, पेलोड तो बहुत छोटा है ना, बाकी का पार्ट देखिए, इसीलिए बोलते हैं जो सबसे ज्यादा खर्चा आता है व्हेन यू डिजाइन अ मिशन, the most of the cost will come for your this what fuel part. You can see that you have blue color, that is fuel, and the sky blue, that is oxidizer. दो टैंक हमें कैरी करने पड़ते हैं रॉकेट में, अगर ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी वाला है, लिक्विड वाला है आपका, ठीक है. फिर उसका देखिए पंप है, नोजल है, फिन है, ये पूरा पार्ट पता है क्या, सिर्फ सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, या कुछ समय के बाद जब फ्यूल खत्म हो जाता है कोई यूज नहीं रहता है हमारा, तो आप देखिए कितना परसेंटेज यूज होता होगा. फाइनली हमारे मिशन पे सक्सेस होने के लिए कितना परसेंट होगा, रॉकेट का पार्ट कितना परसेंट होगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट goes like what, it will like what, it is come out, it will remove. So what is the main part for us, payload part. Now tell me how much percentage will be for the, like if you're talking about total rocket, पूरे रॉकेट की बात करें उसमें से कितना परसेंटेज पेलोड होगा, कितना पार्ट होगा पेलोड के लिए यूजफुल होगा. So almost 20%, 20 to 30, 70% is this fuel, oxidizer, pump. This wall it will get over, means it will come out, it will remove. So only 20% cost, like see 80% cost is spent on the this part, tank and all. That is what the cost matters. So only 20% is useful for us when we are launching a mission, and 80% is going like what, it is helping us to launch that, means it is going to waste after certain time, it will separate from the rocket. Okay, so these are the some of the part.
So in which part payload comes, like satellite comes? In the nose cone part. And this nose cone also what? To give the, like, see, you can see it is like a cone shape, right? Sharp point is there. You know, if you, अगर आप देखेंगे हवाई जहाज का ना, तो जो फ्रंट वाला नोज वाला पार्ट होता है वो हवाई जहाज का कुछ ऐसे होता है, अगर आप देखेंगे शार्प नहीं होता है, बट रॉकेट में शार्प होता है। कोई बता सकेगा ऐसा क्यों? हवाई जहाज में अगर फ्रंट वाला देखेंगे पार्ट ना, जो नाक होती है उसकी ऐसे कर्व होती है, बट रॉकेट के केस में कोनी शार्प होती है ऐसा। व्हाई इट इज, एनी आइडिया? हाँ बोलिए हिजवा। सर क्योंकि जो जब वो ऊपर जाता है तो ये शार्प पॉइंट उसे जैसे हवा जाने में मदद करता है, जैसे वो अपनी एयर को, इससे वो ज्यादा रुक नहीं पाता एयर से। वेरी गुड। सो एज हिजबा इज सेइंग दैट इट्स अबाउट ड्रैग, जो आप बोल रहे हैं ना ज्यादा तेजी से, तो एक क्या होता है, रेजिस्टेंस जनरेट होता है। फ्रिक्शन पता है सभी को? घर्षण। घर्षण पढ़ा होगा आपने, फ्रिक्शन बोलते हैं हम जिसको, राइट? यस सर मेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं लीव कर लूं? यस यू कैन लीव। सर हियर यू हैव फ्रिक्शन। और पता है स्पेस की भाषा में, एयरक्राफ्ट एविएशन की भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तो यहाँ पे पता है जब रॉकेट होता है तो रॉकेट बहुत तेजी से जाता है, ठीक है ना? इवन हवाई जहाज से तेजी से जाता है। हवाई जहाज की जो गति होती है उससे बहुत ज्यादा तेज होती है, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत जनरेट होता है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए अगर आप नुकीला बनाएंगे, जैसे आपने फाइटर एयरक्राफ्ट देखा होगा, फाइटर एयरक्राफ्ट भी बहुत तेजी से फ्लाई करते, राइट? अगर आप पैसेंजर वाला की बात करें, कंपेयर करें पैसेंजर एयरक्राफ्ट और फाइटर, तो पैसेंजर का कर्व होता है, फाइटर का नुकीला होता है फ्रंट वाला पार्ट, क्योंकि जो फाइटर वाले होते हैं उनको बहुत तेजी से जाना होता है, फास्ट ऑपरेशन करना होता है, जैसे एकदम से गए एकदम से ऊपर टर्न ले लिया, राइट? तो वो पॉसिबल होता है। उसके लिए क्या होगा, आपका फ्रिक्शन कम होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, नुकीला पार्ट बनाते हैं, ठीक है? तो रॉकेट में क्या होता है हमारा, जनरली क्या होता है, यहाँ पे नुकीला पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, शार्प पॉइंट। और इसको क्या बोलते हैं, ब्लंट। इसको क्या बोलते हैं, ब्लंट, ठीक है? तो आप ये अभी देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या होता है आपके रॉकेट में, क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, जनरल होते हैं कंपोनेंट, नोज कोन, फ्यूल टैंक होते हैं, 2 टैंक होते हैं आपके। कितने टैंक होते हैं? अगर आप लिक्विड क्रायोजेनिक की बात करें, एक तो लिक्विड, एक फ्यूल टैंक होता है, और एक क्या होता है, ऑक्सीडाइजर टैंक। क्या होता है? ऑक्सीडाइजर टैंक। दोनों लिक्विड अगर सर हाँ बोलिए। सर ऑक्सीडाइजर क्या होता है? मैं बात करूंगा आने वाले सेशन में। अभी हम बात करेंगे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन, तो उसमें हमारा सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन होता है, लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन होता है, क्रायोजेनिक होता है। अभी जो हमारे इंडिया में जो रॉकेट यूज होते हैं, जीएसएलवी एंड पीएसएलवी, आपका स्पेशली जीएसएलवी में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होता है, मतलब कि हम क्या करते हैं, जो चीज गैस के फॉर्म में होती है उसको लिक्विड में बनाते हैं। आपका जो ऑक्सीजन होता है वो किस फॉर्म में होता है बच्चों, आपके एटमॉस्फेयर में? गैस। आपको ये, आपने ये पढ़ा होगा, अगर गैस को अगर स्टोर करेंगे किसी सिलेंडर में तो ज्यादा स्पेस लेगा, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, राइट? वही अगर लिक्विड, इफ यू स्टोर लिक्विड इन अ वेसल, इट विल टेक लेस स्पेस, राइट? बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर। तो इसीलिए जो टैंक होता है, द टैंक व्हिच वी हैव टू स्टोर, so which will be better, storing a liquid or storing a gas? Which will be better? Storing a liquid is better. तो क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस होती है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, लिक्विड के फॉर्म में। उसी टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। मतलब converting your like hydrogen and oxygen gas into the liquid form by taking the temperature very low, like -250 डिग्री सेंटीग्रेड। उतना टेम्परेचर लेने के बाद क्या होता है, आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके लिए हमें टैंक चाहिए होगा, तो फ्यूल टैंक होता है, ऑक्सीडाइजर फ्रेम, जो आप पूरा आउटर बॉडी होती है, पंप हो गया, फ्यूल को पंप करना है, राइट? जैसे आपने देखा होगा बच्चों, बच्चों किसका माइक ऑन है? गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आप लोग अपना माइक ऑन कर देते हो, बाई मिस्टेक भी हो जाता है, प्लीज। डिफरेंस, ये डिस्टरबेंस क्रिएट करता है बच्चों। ओके, नाउ यहाँ पे पंप की बात करें तो लाइक जैसे आप देखिए धरती से, मतलब कि अगर नॉर्थ इंडिया की हम बात करें, इवन इन सम ऑफ द पार्ट ऑफ द साउथर्न इंडिया, वी टेक अ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, सो व्हाट विल डू, वी हैव सबमर्सिबल, राइट? सबमर्सिबल इन अवर हाउस, राइट? और मोटर, वी विल पंप द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो अगर ग्राउंड से वाटर ऊपर लाना है तो आप क्या यूज करते हैं, मोटर लगाते हो, राइट? यस सर नो? पंप करने के लिए बिना मोटर के आप पानी कैसे ऊपर लाओगे, ग्राउंड वाटर?
उसी तरह रॉकेट में भी फ्यूल एक टैंक में स्टोर होता है. योर फ्यूल इज और ऑक्सीडाइज इज स्टोर इन अ टैंक. नाउ यू हैव टू ब्रिंग दैट फ्यूल टू द इंजन पार्ट. लाइक देयर इज अ कंबशन चैम्बर विल बी देयर, जहां पे फ्यूल आपका जलता है. ठीक है, वहां पे लाने के लिए आपको पंप करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें पंप की जरूरत पड़ती है. उसके बाद नोजल. अब देखिए, आपने देखा होगा जब आपने रॉकेट लॉन्च देखा है. चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, उसका साउंड आपको दिखाता हूँ. ठीक है ना, आप देखिएगा साउंड कितना तेज होता है. जो जब फायर आता है, आप साउंड देखिए कितने, तो समझ सकते हैं कितनी तेजी से वो फायर बाहर आता होगा. ठीक है, सर इसकी साउंड कितने नॉट्स की होती है? हाँ सर इसकी रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम पे इसकी साउंड कितने नॉट्स की होती है? फिर से रिपीट करेंगे आप. सर रॉकेट लॉन्च के टाइम पे इसकी साउंड कितने नॉट्स की होती है? नॉट्स तो नहीं मैं आपको बता सकता, बट या जो आपका मैक में जनरली हम बात करते हैं, ठीक है ना, उसका मेरे को आइडिया नहीं नॉट्स में. बट हम जनरली जब बात करते हैं मैक की, क्या बात करते हैं? स्पीड ऑफ साउंड के टर्म में बात करते हैं. किसके टर्म में बात करते हैं? स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है बच्चों, पता है आपको? सर 3 मैक, नहीं मैक मैक होता है. मैक बात करते हैं मैक में. ठीक है ना, तो 3 कितना होता है? 300 अप्रोक्सीमेट 300 मीटर पर सेकेंड. कितना होता है? 300 मीटर पर सेकेंड. मतलब ये अप्रोक्सीमेट 340 होता है. कितना होता है अप्रोक्सीमेट? 340. मतलब कि आपका जो साउंड होता है 1 सेकंड में कितना दूरी जाता है? 340 मीटर. ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. I will show you the sound. Okay, just see the sound, how much heavy sound it is. Now you can think how much force will be generating. Can you see the screen, guys? Yes, sir. You can see that screen. What is there on the screen, guys? Rocket is going to launch. So just look at the sound. Okay, Okay. I'm just playing. Yes. 2, 1, 0. Beautiful launch of The sound is not coming. SSLV-D2 Can you see the fire? Can you see the fire? Yes, sir. How much heavy fire is? See that. Beautiful launch of SSLV-D2 So now here ये जो आपका जो फायर आ रहा है ना, जब फायर हुआ बहुत तेजी से नीचे आता है तो क्या होता है? रिएक्शन होता है उसका. उसी रिएक्शन से क्या होगा? It will go in upward direction. Upward direction. If I can show you the sound of this, just give me a minute. I'll just show you. Just you can hear the sound. Okay. Okay, I'll show you. My like I went and I saw a launch, so I'll show you that. Okay. Okay, I'll show you that video in that you can hear that sound. Okay. Just give me a minute, guys. Just searching the video. Okay, so sound I'm not able to get. I'll just check it and tomorrow I'll show you. I'll pray us that how much heavy sound it is. I'll show you one of the launch which I have seen from the close. It was happened in November. I'll show you the video. Can you see that video, guys?
Yes, sir. This is night, midnight 12 launch is happening. LVM3. Okay, OneWeb mission. Can you hear the sound, guys? I am extremely happy to declare Night. that Okay. GSLV C51 successfully launched the precise orbit of Mission 1 today. In this mission, India and ISRO Can you hear the sound? Apart from music. Majestic liftoff and the announcement of Propellant liftoff from Wing Operations Director. Sir, I shared you one video in that. Okay, let me stop. Okay, so Sir, I shared you one video in that sound is there. okay, tomorrow I'll play. Okay, tomorrow I'll play that with sound, so I can just show it too. Okay, let's go for the presentation. Okay, so you see the light. Have you seen the light, guys? Yes, now you think that night time it's become day. Now light is that much heavy, then how much sound it will be? No, I just, when I went last time, so my mobile has fallen because of the sound. It has broken, you know, that heavy sound will be. Sir, The thing is, you all will be, some of you who will be doing really good might getting a excuse me, chance. sir. Yes. Sir, ट्यूशन जाने का टाइम हुआ, सर लीव Yes, कर रहा yes, हूँ. you can leave. So out of you, like, see, this workshop is going to get over, right? So might some of you get, we will be selecting some of the students and you will be getting a chance to see the rocket launch, the same what you are seeing here in video from very close. So that, like that happens. So perform well and be active, and yes, please, like what, be disciplined, answer the questions, be interactive, and might some of you get selected for it. Okay, that is what the one of the part of this workshop. Okay, fine. So these are the components of rocket: nose cone, fuel, frame, oxidizer, pumps, nozzle, and fin. What is the use of fin, guys? You have seen, like in the rocket, 3 verticals like this will be there, right? Like in the aircraft. Why it is? Why they use fin? Anyone? Any idea? Why they use fin? मेरा आवाज आ रहा है बच्चों? Yes, Sir, sir. some disturbance. Okay, now see, the thing is, ये Someone जो on fin the होता है mic, ना, sir. fin इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब आपका रॉकेट लॉन्च होता है तो it will rotate like this also, in order to counterbalance. It should not rotate like this. If it is rotate like this, what will happen? It will become unstable. Okay, so for that purpose basically we have the fins. Okay, जो वर्टिकली ऐसे करके लगाते रॉकेट. तो ये आपके बेसिक कंपोनेंट्स हो गए. ठीक है, राइट. तो ओके, इसके बाद चलिए हम कल के सेशन में बात करेंगे. आज के सेशन में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. ठीक है, चलिए. तो Okay, sir. Sir, some disturbance, sir. Someone on the mic. now who is coming for minutes of notes, means what we have learned today? Who is coming forward? Who want to answer what we have learned today? Sir, shall I? Raise the hand who want to answer, who want to speak that what we have learned today. आज हमने क्या सीखा? कौन बताएगा? ओके, पीहू बोलिए. Sir, Newton's law first, Newton's law second, and Newton's law third. ओके, और सर हमने रॉकेट सर मिसाइल्स के बारे में भी सीखा. ओके, संतोष. Sir, first we learned about what is rocket, and Okay. second we learned about Newton laws. Afterwards, we learned about rocket paths. इनके पार्ट्स के बारे में समझा और ये कैसे लॉन्च होते हैं, कैसे
वो लैंड करते हैं उसके बारे में भी समझा। ओके नंदिनी। सर हमने सबसे पहले रॉकेट, व्हाट इज रॉकेट ये समझा, उसके बाद में एक रॉकेट और मिसाइल में क्या अंतर होता है ये समझा, फिर न्यूटन लॉ समझे, उसके बाद में सर हमने रॉकेट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कौन कौन से मेन टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा। गुड। And अमृत। how rocket sound will come. तो आज हमने बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ रॉकेट के बारे में सीखा और रॉकेट Okay. में एयरक्राफ्ट में जो आगे की तरफ छोटी सी पिन लगी रहती है उसका क्या वर्क होता है इसके बारे में सीखा और इंट्रोडक्शन टू रॉकेट टेक्नोलॉजी मतलब कि रॉकेट के जो टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में सीखा और जो रॉकेट का प्रिंसिपल होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये सीखा और जो एयरक्राफ्ट होते हैं एयरक्राफ्ट किस तरह से वर्क करते हैं उनमें जो आगे की तरफ जो फैन लगा होता है जो इंजन लगा होता है वो किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से प्लेन आगे की तरफ मूव होता है ये सीखा और डिफरेंस बिटवीन रॉकेट एंड मिसाइल सीखा और घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के बारे में सीखा और न्यूटन्स ऑफ लॉ सीखे। ओके व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ? कौन बताएगा न्यूटन का पहला सिद्धांत क्या होता है, क्या बोलता है? यस अनुभव। Sir, it will be only in rest. What it will be in rest? Newton's first law. Newton first law in always in rest. So can I? Sir. No. Can I? So can I? Yes अमृत। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये है कि कोई भी चीज अगर स्थिर स्थिति में है तो जब तक हम उसमें कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वह उसी स्थिति में रहेगी और जैसे हम उसमें फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। Okay good. Anva, now you can say. Yes sir. Tell me. Sir, if it is in only rest, if we are not applying the force, it will be in rest only, sir. And what about motion? Sir. But both things you have to say. If it is in rest, it will be in rest only. If it is in motion, it will be in motion only. Until you doesn't apply what? Yes. You don't apply what? Force, external force. Good. Okay guys, and what about homework? Main thing you forget. Nobody mentioned that. मैंने कुछ काम दिया है. Yes sir. Yes. So make slides. Rocket. You have to make presentation. 2 to 3 slides, and there you have to talk about what is rocket and what is missile and what is the basic difference, and what are the missiles are there in India. Like just for example, if I say Agni is one of the missile. Okay, Agni, Akash, Nag, something. There are many. So you have to find out beautiful picture from the Google. You can explain that tomorrow. 5 minutes I'll give. You can do in group also. Okay, if you want. Okay sir. Okay, fine. Okay guys, then fine. Nice to talk to you and looking forward tomorrow. And yeah, at the last, I would like to tell you, if you are free, there is a one more session tomorrow. Like workshop session is there. Tomorrow is Sunday, right? Yes, sir. So tomorrow we have 2 sessions. So if you are free and you can join it, evening also we have 1 session. One is this workshop session, and then evening 6 o'clock we have another session. So if anybody is interested, you can talk to ma'am, or okay, let me share a poster. If you are interested, you can join it. Okay, so there we have invited one of the guests. He is very young like you guys, and he have a lot of many achievements. Okay, he looks like a genius, you can say. He having lot of many achievements, and even I too also don't have that many things what he have now, and he's only 12-year-old, and he has recently cracked the JEE mains exam. You know JEE mains, right, everyone? Yes sir. So he did not went to school also, he never went to school. He did all his schooling from home, and his father only helped for this. So he's a motivation for it. So you can listen him, you can get like the positive things from him, right? So there is a session tomorrow 6 o'clock. If you want to join, you can join if you are free. Okay, so this is session. I'm just sharing the screen. So this is tomorrow 6 o'clock evening. It will be live on YouTube, and if you want to join in Zoom, you can join. So his name is Coding Master Devan. You can search on a YouTube. You'll find out his interviews and all. So many interviews are there on the news channel and all. Okay, so you can just type on Google. You will find out, even on YouTube also, Master Devan's Dangar. You'll find out. Okay, so he's just 12-year now. So you can have the interaction with him tomorrow. You can ask your doubts, how at all. You can get inspiration, and you can get some positive feedback from him. Okay, fine guys. So thank you so much guys. See you tomorrow. Anybody is asking? Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir.
थैंक यू सर थैंक यू फॉर बोलिए अमृत। तो हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि रॉकेट को एक बार स्पेस में भेजने के बाद दोबारा उसका रीयूज कर सके? अभी तो हमारे इंडिया में डेवलप हो रहा है रीयूजेबल का, बट स्पेस एक्स ने तो ऑलरेडी टेस्टिंग कर ली है, तो अभी दैट टेक्नोलॉजी ओनली स्पेस एक्स है रीयूजेबल। इंडिया डेवलप कर रहा है अभी। ओके तो सर। इंडिया ने भी आरएलवी लॉन्च अभी थोड़े दिन पहले टेस्टिंग की थी बेंगलुरु में, तो इट्स गोइंग ऑन। maybe by 2030 we'll be having reusable something like the technology. Okay sir. India Thank you, is sir. really working hard in this, that in the future India is going to lead the world in the especially space technology, NASA and at all. Over to that. Yes sir. सर Any जैसे other doubt guys? डेवलपमेंट हो रही है ना, आगे चल के वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा हर चीज में। पीयू क्या बोल रहे हैं आप? सर मैं कह रही थी जैसे इंडिया में डेवलपमेंट होती है वैसे इंडिया आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा पीयू, बिल्कुल भी आपका कट कट के। आप थोड़ा पास आकर के बोलोगे। सर जैसे इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है ऐसा लगता है कि कुछ साल बाद वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा हर चीज में। हाँ, हर चीज में टॉप हो जाएगा। राइट, गुड। Okay guys, so nice to talk to all of you, and looking forward tomorrow for both of the session. We'll see. Okay, bye bye. Okay. Have a nice So, day. Thank you so much. Send the link of that evening session. Sure. You can ping me, tomorrow. okay? If Okay, you thank want you, link sir. and at all, you can just drop me a message. I'll share it. Okay guys, bye. Okay. Take care. Sure. Have a nice day. Bye. Thank you.